So we were discussing about the posterior side or the back side of the ear. हम पिछली क्लास में बैक साइड ऑफ द ईयर की बात कर रहे थे. हमारे बैक साइड ऑफ द ईयर में बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं. थोड़े पॉइंट और समझ लें, फिर हम फ्रंट साइड में आ जाएंगे. So let's continue few more points, and they are working very nicely for the pain management. And after finishing them, then we will come back to the front side. Okay. So let's start. In the previous class, we have divided the back side of the body in multiple parts. हमने कान के पीछे के भागों को हमने मल्टीपल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है. एक बार मैं क्विकली बताना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स सी नाउ. If you look at this image, so in the previous class we were discussing about these multiple division on the back side of the ear or on the posterior side of the ear. So as per this division, we have seen the heart is located in the upper part of the body. The kidney is located in the lower part of the body, and all the other organ like the lungs, like the spleen, and like the liver is located in the middle part of the body. तो ये हम समझ चुके हैं कि हार्ट की लोकेशन हमारे कान के ऊपरी भागों में होती है. ये हमारे हार्ट की लोकेशन है. और किडनी की लोकेशन हमारे लोब के पीछे वाले भाग में, संपूर्ण शरीर के नीचे वाले भाग में और कान के नीचे वाले भाग में होती है. और बाकी जो ऑर्गन बचते हैं जैसे कि लंग्स, तो लंग बीच में मिलेगा, स्प्लीन भी बीच में मिलेगी और लिवर भी बीच में मिलेगा. सो द आउटर साइड विल बी द लिवर, inner side will be the lungs, and in between this will be the spleen. So by using this concept we can treat the multiple part of the human body. हम संपूर्ण शरीर के अलग अलग पार्ट्स को ट्रीट कर सकते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि कान में हमारा शरीर उल्टा होता है. जैसे माँ के गर्भ में बच्चा वैसे ही हमारे कान में शरीर होता है. So we are having the position of inverted fetus in our ear that we know. So if we think about that position, so let's go ahead and look at this position now. Look at this position. अगर हम इस कान के अंदर एक उल्टे बच्चे की कल्पना कर लें कि एक ऐसा बच्चा जिसका सिर नीचे है और जिसके पैर ऊपर हैं, तो अगर सिर नीचे होगा तो गर्दन भी नीचे होगी, राइट? So let's see here. अगर हम कान के इस डिप्रेशन की बात करें, if we talk about the depression on the posterior side of the ear, now tell me why this depression is here. What is the reason of depression is here? Who and what we can see on the अपोजिट साइड. अगर हम इस डिप्रेशन की बात करते हैं कान के पीछे, तो इसके ठीक अपोजिट साइड में क्या है बताइए. व्हाट इज देयर? टेल मी. इफ यू लुक एट द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ईयर, सो लुक एट द, अगर आप कान के फ्रंट साइड को देखते हैं, जैसे कि ये देखिए, तो फ्रंट साइड में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके कारण पीछे खड्डा रह गया, पीछे खड्डा बन गया? सो the answer is this. In the front side we have this elevated cartilage. ये हमारी cartilage है जो आगे की ओर उठी हुई है. This elevated cartilage in the front side, and because of this cartilage we can see the depression on the back side of the ear. Are you getting my point? Yeah. तो आगे जो उभरा हुआ भाग है जिसे हम कहते हैं एंटी हेलिक्स, और जो हमारी स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है. द एंटी हेलिक्स डूइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पाइन, एंड दिस पार्ट इज एलिवेटेड इन द फ्रंट साइड. नाउ इफ वी गो इन द बैक साइड ऑफ द ईयर, अगर इसी के हम बैक साइड में जाते हैं तो हमें डिप्रेस भाग मिलता है. लेट्स सी हियर. सो वी आर गेटिंग द depressed part here. So the meaning of depression, that in the front side this part is elevated, which is making depression on the back side. आगे की तरफ ये part
एलिवेट किया हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो पीछे की साइड यह भाग डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है. Okay, so now look at this image once again. In this image we can see this is the elevated part of the antihelix. Now this antihelix is making Y-shaped structure here. This is the making the Y-shaped structure here. Okay, तो ये एंटी का पार्ट हमारा आगे की ओर Y-shaped स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट? तो अब आपको क्या करना है? Now you do one thing, just hold this point. Just hold this point. इस पॉइंट को जरा होल्ड तो करिए अपने अपने कान में अंगूठे से. Kindly hold this point in your ear with the thumb, with the index finger, with the index finger. Hold this point and just see what is in the back side. इसके ठीक पीछे क्या है? अगर इसी के ठीक पीछे मैं उंगली घुमाऊं, what I can see there, just from here. If I go on the back side, what I can see, because this is the elevated part, so if this is the elevated part, definitely depression will be there. Can you feel the depression? How many of you can feel the depression? Tell me. कितने लोगों को पीछे डिप्रेशन फील हुआ? बताइए. अगर आपको डिप्रेशन फील होता है, क्या होता है सभी को? उस डिप्रेशन को हम कहते हैं साइटिका ट्रायंगल. In the Chinese language, in the Chinese acupuncture, the depression is called Sciatica Triangle. It is made by 3 points. It is the triangular shape, so it's called the Sciatica Triangle. It's a very good triangle for the lower back pain, for the sciatica pain, and for the pain in the legs, even till the knee area. So this is called Sciatica Triangle. So now let's see in the other image. So I would like to show you the Sciatica Triangle. So kindly see this image. So we are finding the depression here. This is the depression area. So this is called sciatica triangle, and with the help of this, we can treat the sciatica pain. With the help of this triangle, we can treat the lower back pain. We can treat the pain in the lumbosacral area, at the level of lumbar and sacral region, lumbosacral area. And when the sciatica nerve is taking exit and creating the pain in the knee, even we can treat till the knee area. So this sciatica triangle used for any problem which is connected with the lower back, which is connected with the lower spine or the lumbar spine, and which is connected with leg area, right? So this sciatica triangle is very effective for this purpose. इसका प्रयोग बहुत अच्छा है इन चीजों के लिए. तो हम क्या करते हैं, हम इस sciatica triangle को हम सीड लगा सकते हैं, हम इसे ब्लड लेट कर सकते हैं, और हम इस पर निडल लगा सकते हैं. We can put the needle here. When the person is suffering with the motor problems of the feet, the meaning of motor problems, when like in the paralytic case, we can see the blood circulation is good, skin is good, but inability to inability of functioning of the legs. The person suffering with the paralysis cannot do good movement. So movement disability is called motor functions. So if someone is suffering with the motor disability in the lower part, we are using this sciatica triangle for sure. तो अगर किसी व्यक्ति को नीचे के भागों में, या तो कमर में या घुटने में या पैरों में, किसी भी भाग में मोटर एक्शन ठीक से नहीं, यानी पैरों को उठा नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता,
यानी दर्द होना सेंसरी एक्शन है, दर्द मतलब सेंसेस, लेकिन मोटर का मतलब है कि काम करने की क्षमता। जैसे पंखा चलता है, ये मोटर है, मोटर एक्शन। एयर कंडीशन चलता है, ये मोटर एक्शन है। तो जब आपको लगता है कि आपके कमर और कमर के नीचे भाग के फंक्शंस की कमजोरी हो गई है, तो आप इस साइटिका ट्रायंगल का प्रयोग कर सकते हैं। एंड द साइटिका ट्रायंगल इज नॉट ओनली गुड फॉर द पेन बट ऑल्सो गुड फॉर मोटर डिसेबिलिटी। मोटर डिसेबिलिटी के लिए भी बहुत ही गजब का काम करता है। सो नाउ दिस वाज द साइटिका ट्रायंगल। गॉट इट? तो जब हम इस पॉइंट को सर्च करते हैं तो सबसे पहला वी हैव टू सर्च द 3 पॉइंट्स हियर, और इवन वी कैन डू द ट्रीटमेंट हियर रैंडमली। हम यहाँ पर रैंडमली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Ultimately we have to search this area here. Okay, so now the upper area is connected with the knee. The upper area is connected with the knee, right? And the lower area is more connected with the sciatica, and the middle area is more connected with the lumbar. Okay, or if you want to differentiate, then it's okay. Otherwise, go with the whole sciatica triangle. We are always treating the complete sciatica triangle, right? I think it's clear now. Now I would like to bring a focus. अब मैं आपका फोकस एक दूसरे पॉइंट पर लेके आना चाहूंगा। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब किसी को दर्द होता है तो हम क्या करते हैं कि साइटिका ट्रायंगल को ट्रीटमेंट करके फिर बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर कर देते हैं, तो पूरा दर्द चला जाता है। जस्ट ट्रीट द साइटिका ट्रायंगल एंड आफ्टर दैट do the battlefield acupuncture, or do the battlefield acupuncture and the last put the sciatica triangle. So the combination is working very nicely for all types of the painful disorders, right? 1 minute. Now I would like to bring a focus in the other part. अब आपको एक दूसरे पार्ट में अपना फोकस लाना होगा। चलिए यहां पर देखिए, अब फिर से कान पर अपनी उंगली घुमाइए। लेट्स रोटेट योर फिंगर वंस अगेन इन दिस पार्ट। इस पार्ट में फिर से अपनी उंगली घुमाइए। And this is the anti-helix, and reaching in the lowermost part, reaching in the lowermost part of the anti-helix and touch this part, the lowermost part of the anti-helix. Now touch this point. अब इस पॉइंट को पकड़ लीजिए। इस पॉइंट को कितने लोग फील कर पा रहे हैं? How many of you are able to feel this point, the lower part of the anti-helix? Okay, now touch the back side. Touch the back side of this point and feel again one triangle there, that is called cervical triangle. अभी आपको इसके पीछे उस डिप्रेशन को फील करना है जिसे हम कहते हैं cervical triangle. So keeping your one finger here and keeping your thumb there, and this is called cervical triangle. We can feel the depression because if this part is elevated, then definitely the back part will be depressed. So if this part is elevated, and we can feel the very beautifully the back part is depressed. So if you can rub this area, you can feel the clear depression there. So how many of you can feel the depression on the back side? Means how many of you can feel the cervical triangle? सर्वाइकल ट्रायंगल फील कर सकते हैं? ओके, सर्वाइकल ट्रायंगल जो अभी हमने अपर ऊपर की बात की थी, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अपर पॉइंट और द साइटिका ट्रायंगल. द साइटिका ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंसिव ग्रूव. जो ऊपर अभी हमने बात की थी जिसे हम साइटिका ट्रायंगल कहते हैं, वहां पर जो खड्डा है उसी को हम हाइपरटेंसिव ग्रूव भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल को ट्रीट करने से हाई बीपी कम हो जाता है. उसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का खड्डा, हाई ब्लड प्रेशर ग्रुप. और नीचे वाले ट्रायंगल को हम कहते हैं सर्वाइकल ट्रायंगल. So the name itself is telling the story of the cervical triangle. When someone is having the pain in the cervical region, we treat this. गर्दन में दर्द है या फिर कंधे में दर्द है, आर्म में नमनेस है, वो पेन रिफर्ड होकर यहाँ तक बढ़ रहा है,
So we treat this cervical triangle. The cervical triangle is working faster, very faster, very faster. क्योंकि जब कई बार किसी को हाथों में नमनेस आती है तो ध्यान रखिएगा कि नमनेस आना और उंगलियों से कुछ छूट जाना और हाथों की एक्टिविटीज को का कम हो जाना, ये मोटर एक्शंस हैं, मोटर फंक्शंस. मोटर मींस एक्शंस, फंक्शंस, एक्टिविटी, एंड सेंसरी मींस पेन. तो जब भी हम मोटर एक्शंस की बात करते हैं तो हमारे इस सर्वाइकल ट्रायंगल से बहुत अच्छी तरह से ठीक होती है. सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट मेथड. सो लेट्स सी नाउ हाउ कैन वी डू द ट्रीटमेंट हियर. So we can do the acupressure here. So feeling the front side, then going on the back side and feeling this depression here. Feeling the depression here. And in this depression, in this triangle shaped area, we can put the seeds. First, we are feeling this front part. This is the anti-helix. We are going at the lowermost part and holding this from the back side. So you can see this is the back side. If you have pain in the neck, this point will be very painful. You will feel too much pain here. So this is the cervical triangle. We are using this cervical triangle for two problems. Number one, for the problem of the neck and arms. And number two, for the problem of the head region. Because from the cervical region, there are cervical nerves are coming out and some nerves going in the head region and some nerves coming in the arms. So the nerve coming in the head region, if they are compressed, then person feel dizziness. So the cervical triangle is very good for the dizziness. And the nerve who is coming in the arm might create pain and numbness, tingling, etc. There are few problems can be created. Sometimes the frozen shoulder or the shoulder pain just because of the nerve compression in the neck. So we can treat with the cervical triangle. We can use it for thumb numbness, definitely yes. So we can use this cervical triangle, and when you want to work on the thumb, definitely you should use this because in the thumb we are having cervical nerves. In the finger we have cervical nerves. In the small finger also we have cervical nerves. So each and every finger are supplied by the different cervical nerves. So do not forget cervical nerves if you want to treat the thumb. So is it clear now? Now, in the same way, if you want to treat the, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो भी हम सर्वाइकल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, और किसी को अगर सिर में दर्द है या चक्कर आते हैं तब भी हम सर्वाइकल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे. कभी कभी इस सर्वाइकल ट्रायंगल का प्रयोग करने से डिजीनेस या चक्कर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सर्वाइकल नर्व में जब कंप्रेशन होता है तो वो हमारे सिर को ठीक से सप्लाई नहीं कर पाती और चक्कर आते हैं. और हम जानते हैं कि कई लोगों को जब गर्दन में नर्व कंप्रेशन होता है तो उनको चक्कर आते हैं. और सर्वाइकल से निकलने वाली नर्व हमारे हाथों को भी ऊर्जा देती है, तो उंगलियों में नमनेस आती है, सुन्नपन आता है, मूंगी आती है, खाली चढ़ती है. तो आपके ये समझिए कि सिर से लेके गर्दन और हाथों तक कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें सर्वाइकल को ट्रीट करना होता है. वी हैव टू ट्रीट द सर्वाइकल. When we talk about the tremors are more connected with the dopamine of the brain. That is the neurological problems. Tremors are the problem of the brain. But when you want to treat the tremor, definitely as a local area, you will treat the cervical points, but we'll also treat the point
who is responsible for the dopamine secretion. हमारा पार्किंसन का और ट्रेमर्स का एक अलग प्रोटोकॉल है जिसकी हम बात बाद में करेंगे. उसमें एक स्ट्रैटम नाम का एक अलग पॉइंट होता है जो डोपामिन को सीक्रेट करता है. सो लेट्स गो अहेड एंड सी द हाउ व्हेन वी कैन पुट द सीड्स ऑन द साइटिका ट्रायंगल. तो अगर मैं साइटिका ट्रायंगल की बात करूं, इन द फ्रंट साइड आई कैन फील दिस एलिवेशन and just on the back side I can feel this depression. So let's put the seeds in the depression. This is also called hypertensive group. इसी को हम हाई ब्लड प्रेशर का ग्रुप कहते हैं और इसको ट्रीटमेंट देने से लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है. So this is a very good area for the lower back pain and the sciatica pain. Clear or little blurred or not exactly cleared? Zooming possible. Zoom. Okay, big photo required. Okay, we'll do that. Right now we are telling you in this way, and we will do the demonstration on someone after some time. Cervical triangle is very good point for all the person, whether the person is taking chemotherapy and having the numbness, or the person is having just cervical spondylosis and feeling numbness. Because when the person is taking the chemotherapy, that time also the suffering with the severe types of the osteoporosis. जब व्यक्ति कीमोथेरेपी लेता है तब भी उसके शरीर में बहुत तीव्र गति से कैल्शियम का डिजनरेशन होता है और उसकी हड्डियों में दर्द होता है, उसको नमनेस आती है. ओके, बहुत कमजोरी हो जाती है. जब कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी लेता है तो उसकी बॉडी को टॉनिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और उस कंडीशन में हम हमेशा इसका प्रयोग कर सकते हैं. हम इन सारे पॉइंट्स को आपको डेमो करके दिखा देंगे. तो अभी आप समझते जाइए. हमने दो ट्रायंगल समझे हैं, एक सर्वाइकल ट्रायंगल और दूसरा साइटिका ट्रायंगल. वी विल डू द डेमो ऑफ ऑल द पॉइंट्स. सो लेट्स गो अहेड एंड सी द अनदर ट्रायंगल. Now I want to bring your focus on the very good point that is called liver triangle. Liver triangle. So what is the meaning of liver triangle? Try to understand first. This is the point 0. ये हमारा point 0 है. And this is the liver point that we know. So this is the point 0. This is the liver point. And this is the point of spleen that we know. ये हमारा spleen है. अगर आपको नहीं पता तो ये पता चल जाएगा कि लिवर यहाँ पर क्यों है, स्प्लीन यहाँ पर क्यों है. Right now I want to tell you this area is called liver triangle. This whole area is called liver triangle. Liver triangle. Okay, try to understand once more. एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए. जब हम कानों को देखते हैं हम जानते हैं कि ये हमारा हेलिक्स है. ये हमारा हेलिक्स है. जहां पर हेलिक्स अंदर मुड़ता है ये हमारा क्रिस ऑफ हेलिक्स है. और क्रिस ऑफ हेलिक्स के ऊपर एक बिंदु पाया जाता है जिसे हम कहते हैं point 0. So this is the point 0 that we know. This is the point 0. The meaning of point 0, who is bringing balance in whole body. Point 0 का अर्थ है ऐसा बिंदु जो हमारे संपूर्ण शरीर में होम्योस्टेसिस लेके आता है. इसे आप हमारे शरीर का सोलर प्लेक्सस समझ सकते हैं. जैसे सोलर प्लेक्सस संपूर्ण शरीर का
केंद्र बिंदु होता है, इसी तरह से 0 पॉइंट हमारे संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु है और हमारे संपूर्ण शरीर को साम्य अवस्था में लेके आता है. इट इज बैलेंसिंग होल बॉडी. नाउ फ्रॉम द 0 पॉइंट अगर हम देखते हैं कि नीचे की ओर, if we talk about the 0 point, so this is the 0 point. So the lower part is the chest and the upper part is the abdomen that we know. The upper part is the abdomen that we know. कि लोअर पार्ट तो छाती है और ऊपर का पार्ट पेट है और इसके बीच में है हमारा पॉइंट 0. अब हम आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं वो ये है. लेट्स सी हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो फ्रॉम द पॉइंट 0 इफ आई मेक द ट्राइंगल, अगर मैं पॉइंट 0 से एक ट्राइंगल का निर्माण करता हूं इस तरह से, if I am making the one triangle with the help of point 0, so this triangle is very much important. This triangle is called liver triangle. तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए आखिरकार मैं किस जगह की बात कर रहा हूं. अगर आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगी तो मैं इसके बारे में फर्दर आपको बता पाऊंगा. I will able to tell you further. So let's try to understand once more. So if this is the helix, this is the helix. Keep on going with the helix. Keep on going. Keep on going. Keep on going. And helix is end. The crest of helix is ending here, but you keep on going. Keep on going. Okay. If you are keeping on going from this point, so the upper point is the liver, and the lower point is the spleen. Okay. अगर इससे हम चले जाएं तो ऊपर का पॉइंट लिवर है, नीचे का पॉइंट स्प्लीन है और ये हमारा 0 पॉइंट है. इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा लिवर ट्रायंगल. तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में हमें लिवर की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें इस पूरे ट्रायंगल को ट्रीट करना होता है. वी हैव टू ट्रीट दिस होल ट्रायंगल इफ वी आर सफरिंग विद एनी टाइप्स ऑफ द लिवर डिसऑर्डर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवर डिसऑर्डर? दिस इज द मेन क्वेश्चन. चलिए बताइए कि लिवर डिसऑर्डर का मतलब क्या है. आप इस ट्रायंगल का प्रयोग कब करेंगे? बिकॉज दिस इज द in the auricular class I am always using one word for this triangle. I am telling this mesical triangle. Even I am telling this triangle sleep triangle, mesical triangle, liver triangle. तो सोचिए कि इस ट्रायंगल का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं. और ये ट्रायंगल एक बहुत ही, दिस इज अ वेरी ग्रेट इन्वेंशन इन द ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, दिस ट्रायंगल. तो बताइए कि कुछ तो बताइए आपके दिमाग में क्या आता है कि इस ट्रायंगल का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं. और ध्यान रखिएगा कि जब हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे तभी हमें रियल बेनिफिट मिलते हैं. अगर आपने सिर्फ एक सिंगल लिवर पॉइंट का यूज किया तो हमें रियल बेनिफिट नहीं प्राप्त होते. तो पहली बात तो दिस ट्रायंगल विल वर्क फॉर द हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी and all the types of the hepatitis. Number 2, this triangle will work on the cirrhosis of liver. Wonderful. ये ट्रायंगल सिरोसिस ऑफ लिवर पर काम करेगा, क्योंकि जब आप सिरोसिस ऑफ लिवर को ठीक करना चाहते हो आप अकेले लिवर से ठीक नहीं कर पाते. ये ट्रायंगल काम करेगा हेपेटोमेगली पर, जब लिवर का साइज इनलार्ज हो जाता है, जिसे हम हेपेटोमेगली कहते हैं. हेपेटोमेगली, मैगी, मेगली, मेगली मतलब मेगा, हेपेटोमेगली. इस ट्रायंगल का प्रयोग हम हेपेटोमेगली पर करते हैं. और कुछ लोगों ने तो इतनी खोज की इस ट्रायंगल के ऊपर, कहा है इस ट्रायंगल को अगर आप पॉइंट लगाते हो तो आपको कितने घंटे की नींद बढ़ानी है? 2 घंटे की बढ़ानी है तो इसी ट्रायंगल में यहां पर पॉइंट लगाओ. 3 घंटे की नींद बढ़ानी है तो इसी ट्रायंगल पर यहां पर नींद लगाओ. अभी हम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भूल जाते हैं. अभी हम सिर्फ एक बात पर फोकस करते हैं. इफ वी वांट टू इंप्रूव द स्लीप, द पर्सन इज सफरिंग विद द इंसोम्निया एंड वी वांट टू एनहांस द स्लीप, यूज दिस ट्रायंगल, राइट? So this triangle is called mesical triangle because this is the very good. If someone is having lots of anger, we can bring the peacefulness in the mind with the help of this triangle. हम जानते हैं कि लिवर, अगर आप ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में देखते हो तो आप पाओगे इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में बांटा गया है. There are 2 parts has been declared in the auricular acupuncture. There are 2 parts. Yeah.
So this triangle is also called magical triangle, and there are two divisions of this triangle. So first I would like to tell you in the other image for clear understanding. So let's use this image. Okay, let's use this image. Perfect. Okay. So suppose this is the point 0. This is the point 0. 0 point means center core of the human body. Who bring homeostasis. Now, we will make the triangle like this here. So this is a triangle. The upper area is called liver point. And the lower area is called spleen point. Lower area is called spleen point. But this whole triangle is called magical triangle or the liver triangle. This is very useful for all types of the liver disorder, whether it's a fatty liver or cirrhosis of liver, or any types of the liver disorder. This triangle is very good, like the hepatitis. And if we talk about the human body, liver is very deeply connected with many things, because liver is very deeply connected with our anger. So this triangle is also very good for anger management. But we have to treat this whole triangle. Do not focus on single point. Treat entire triangle. Put at least 3 points here if you want to treat this whole triangle. कम से कम आपको 3 पॉइंट लगाने होंगे, तब ये जाकर पूरा का पूरा ट्रायंगल ट्रीट होगा. 4 भी लगा, अगर आप सीट से लगा रहे हो आप 4 भी लगा सकते हो. So the all types of the liver disorders will be treated with the help of this triangle. अब सबसे गजब की बात तो है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, वो अब आप ध्यान से सुनिए. अब मैं आपको अगले 5 मिनट में 1 लाख रुपए की बात शेयर करूंगा. I will share the thing of 1 lakh rupees in next 5 minutes. Okay. So remember, many persons who are roaming in the India and doing many diabetes camp, they are putting the point in this triangle and they are searching the tender point in this triangle and putting the point in this triangle, because pancreas is located in the liver triangle itself. इसी ट्रायंगल में होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा ढूंढना होता है, क्योंकि 80 पॉइंट के हिसाब से उसकी एक लोकेशन तो मानी गई है, वो लिवर के आसपास ही होती है. बट यू हैव टू सर्च हियर एंड देयर लिटिल बिट, एंड इफ यू पुट द pancreas point here, you can control the diabetes just by single point. You can control the diabetes. Put the point here, let it be there. यहां पर पॉइंट लगा दो, छोड़ दो, लगा रहने दो. कई लोग 15 दिन के लिए लगाते हैं, कुछ लोग 1 महीने के लिए भी लगाते हैं. आप 7 दिन के लिए लगाओ. अभी इनिशियली पुट फॉर द 7 days and tell the patient keep on tracking. Okay, now for 15 days you can put the point in the right side, and the next 15 days you can put the point in the left side, or you can choose the 7 days method. For the 7 days you can put the point in the right ear, and for the next 7 days you can put the point in the left ear, right? So this is the very good triangle. अब बात ये आती कि भाई आखिर डायबिटीज का पॉइंट पैंक्रियाज में कहां से आएगा? तो पहली बात तो ये है कि पैंक्रियाज
की लोकेशन भी इसी में होती है। लेकिन अब क्या आपको पता है कि डायबिटीज का क्या लिवर से कोई कनेक्शन होता है? वेदर डायबिटीज इज कनेक्टेड विद लिवर और नॉट? क्या कोई कनेक्शन है डायबिटीज का लिवर से? कि नहीं नहीं, डायबिटीज का लिवर से क्या संबंध है, वो तो पैंक्रियास से संबंधित है, उसका क्या लेना देना लिवर से? लिवर का मतलब तो हम समझते हैं कि मतलब खाना नहीं पचता तो लिवर गड़बड़ है, बस, और क्या है, यही तो है। लेकिन डॉक्टर को पता है बात, डॉक्टर नोज दिस, that diabetes is very deeply connected with the pancreas. So as soon as you go to the doctor, my sugar is high, immediately they are giving you metformin, which is targeting liver, not the pancreas. जैसे डॉक्टर के पास गए वो आपको क्या देते हैं? मेटफॉर्मिन, जिसका पैंक्रियास से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, जिसका सिर्फ लिवर से संबंध है। कि क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आखिर शुगर तो लिवर में जमा होगा, तो लिवर को ही थोड़ा सा स्टिमुलेट करो। मैं वो बात अलग है कि मेटफॉर्मिन से लिवर खराब होता है। अगर इफ यू आर टेकिंग द एक्सेसिव डोज ऑफ द मेटफॉर्मिन, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिवर। तो बात समझिए कि जब हम लिवर की दवाई खिलाते हैं और शुगर अच्छी हो जाती है, तो हम लिवर का पॉइंट लगाएंगे तो शुगर अच्छी क्यों नहीं होगी? तो खाने पीने में फोकस करिए, जहां जहां भी आपको दिख जाए दिस थिंग इज गुड फॉर लिवर, दिस थिंग इज गुड फॉर लिवर, जस्ट फोकस ऑन द लिवर एंड यू विल able to work on the diabetes. I'm telling you diabetes type 2, not the type 1. Type 2, क्योंकि type 2 आती है हमारी irregular फूड हैबिट्स और लाइफ स्टाइल के कारण। तो अब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप लिवर ट्राइंगल पर फोकस करिए और लिवर ट्राइंगल के अपर हाफ भाग में फोकस करिए। So let's go ahead and divide the liver triangle in two parts. अब हम liver triangle को भी दो parts में divide कर देते हैं. So look at here. So now we will do the two division. So this is the point 0. One line going up, one line going down, and we are dividing this in two parts. This upper half and this lower half. Upper half and lower half. The upper half working for the liver, and even the lower half working for the liver. For the liver, we are treating full area, but the upper half more working for the liver and the lower half more working with the spleen and digestion. So the upper part is called liver area and the lower part is called spleen area. तो ऊपर के भाग को हम लिवर एरिया कहते हैं और नीचे के भाग को हम स्प्लीन एरिया कहते हैं। हमें डायबिटीज का पॉइंट कहाँ मिलता है? हमें डायबिटीज का पॉइंट ऊपर के भाग में मिलता है। वी आर गेटिंग द पैंक्रियाज पॉइंट इन द अपर पार्ट, पैंक्रियाज पॉइंट विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर द डायबिटीज। ऐसे हमारे कान में बहुत सारे सीक्रेट पॉइंट हैं, हम सब बताएंगे आपको। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग बिकॉज with the help of you, with the hands of you, we will able to treat many persons suffering with the diabetes, suffering with the different ailments. तो ये पैंक्रियाज का पॉइंट है जो बहुत ही गजब का पॉइंट है, आप इस पर लगाइए पॉइंट्स। अब ये बताइए कि पैंक्रियाज का काम क्या है? क्या पैंक्रियाज का काम शुगर को कंट्रोल करना है? तो आंसर है यस, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पैंक्रियाज का काम सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना है, बाकी और कोई काम नहीं है? व्हाट इज आंसर? आपका आंसर क्या है? पैंक्रियाज का काम है सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना, बाकी कोई काम नहीं है। टेल मी व्हाट यू थिंक। चलिए बताइए, पैंक्रियाज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है कि प्रोटीन को पचाता है कि फैट को पचाता है? अगर और भी कोई काम है, सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ द पैंक्रियाज? whether it is helping for the digestion of carbohydrate or digestion of the fat or digestion of the protein.
तो भाई जिन लोगों ने ऑल बताया उनके लिए तालियां, क्लैपिंग। पैंक्रियाज का काम सिर्फ एक नहीं है, हमारे शरीर में सबको एक ही एक काम दिया है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह को काम दिया है ओनली कार्बोहाइड्रेट, पेट को दिया ओनली प्रोटीन, लिवर को दिया ओनली फैट। लेकिन पैंक्रियाज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, all three. So the pancreas secreting three enzymes and we are telling LAT, LAT, LAT का मतलब बताइए सरबजीत जी, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LAT? और भी सब लोग बताइए। पैंक्रियाज से तीन कौन से एंजाइम निकलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ थ्री एंजाइम सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज? वन एंजाइम डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट। वंडरफुल, बता दिया। जिसने पहले बताया वो सिकंदर, विशाद जी ने सबसे पहले बताया, एक्सीलेंट। जो पहले बताएगा वही सिकंदर है, आता सबको है ना। तो पैंक्रियास सीक्रेटिंग थ्री एंजाइम्स, वन इज द लाइपेज फॉर लिपिड और कार्बो और फैट। अब पैंक्रियास गड़बड़ हो जाए, आप एक चम्मच घी खाओगे, वो पूरा का पूरा घी आपकी स्टूल में निकल जाएगा। You will not able to digest the ghee if your pancreas is not healthy. If you are eating the carbohydrate, you will not able to digest without the pancreas. If your pancreas is unhealthy, even you will not able to digest the protein. You will not able. So the pancreas is the organ who is controlling the sugar as well as for the digestion. Now tell me whether you are going to use liver triangle for digestion or not. आप लिवर ट्रायंगल का प्रयोग डाइजेशन को ठीक करने के लिए करोगे या नहीं करोगे? बताइए। अगर किसी का प्रोटीन नहीं पचता, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता, फैट नहीं पचता, तो आप इस एरिया का प्रयोग करोगे या नहीं करोगे? Whether you are going to treat this area or not. Whether the person is having carbohydrate in problem, not able to digest the carbohydrate, or not able to digest the fat, or not able to digest the protein. We will use this area. तो इस एरिया को हम कहते हैं वेरी गुड एरिया फॉर डाइजेशन। नाउ अब नीचे वाले एरिया की बात करते हैं जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन इज वेरी डीपली कनेक्टेड विद द डाइजेशन। स्प्लीन का भी संबंध हमारे पाचन से है। सो वी विल आल्सो गोइंग टू यूज दिस। सो फॉर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वी विल यूज फुल ट्रायंगल, फुल लिवर ट्रायंगल फॉर द डाइजेस्टिव इश्यूज। हम पूरे के पूरे ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। वी विल यूज फुल ट्रायंगल, राइट? ओके, नाउ बताइए, वेरी गुड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम विद यू कि जब हम स्प्लीन ट्रायंगल को ट्रीटमेंट देते हैं, वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ द स्प्लीन ट्रायंगल। जब हम स्प्लीन ट्रायंगल को ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? व्हाट बेनिफिट वी विल गेट इफ वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट टू स्प्लीन ट्रायंगल, स्प्लीन एरिया? नंबर वन बेनिफिट, द स्प्लीन इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, दैट वी नो। Number two, spleen is giving strength to muscles. You know that as per the 5 element concept, हमारे 5 element concept के अनुसार स्प्लीन ही वो ऊर्जा है जो लिवर को मजबूत बनाती है। स्प्लीन ही हमारे लिवर को ताकत देता है as per the concepts of 5 elements. So if you remember the concept of 5 element, liver is giving energy to the tendons and ligament. Tendon, ligament, joint. And spleen is giving energy to the muscles. Spleen is giving energy to the muscles. तो जब आप लिवर ट्रायंगल को ठीक करते हो तो जॉइंट को मजबूत बनाते हो और जॉइंट में पाए जाने वाले टेंडन, लिगामेंट को ताकत देते हो, और जब आप स्प्लीन को ठीक करते हो तो आप मसल्स को ताकत देते हो। ओके, सो इफ समवन इज सफरिंग विद द मसल्स पेन, वी ऑलवेज यूज स्प्लीन ट्रायंगल।
Now the very beautiful thing is this, if you see the human body, अगर हम मानव शरीर को देखें, so heart is made by, tell me, heart किससे बना है? हड्डियों से बना है कि मसल से बना है? Heart is made by bone or muscles. Heart is muscles. So if your spleen is stronger, your heart will be stronger. Your heart will be having good energy. So that's why when you are treating the spleen area, you are strengthening your muscles. You are also working for the muscle pain. Even you are giving energy to the heart. So your heart is also getting good energies if you are stimulating the spleen. So in the traditional auricular acupuncture, the other name of spleen is muscle pain area or muscle relax area. आपको पता होगा कि स्प्लीन का ही एक दूसरा नाम है. हम क्या बोलते हैं स्प्लीन को? The other name of the spleen area is also, is there written, this area is also called muscle relax area, because this area is connected with the spleen. इसी एरिया का दूसरा नाम है मसल रिलैक्स एरिया. ये एरिया का संबंध स्प्लीन से है. गॉट इट? कितने लोगों को पता है कि इसका नाम मसल रिलैक्स एरिया है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द अदर नेम ऑफ द spleen is muscle relax area? Maybe 50% of you knowing. No, you don't know that. पता होगा, किसी को तो पता होगा. Don't know. जो नीचे वाला एरिया उसी को मसल रिलैक्स एरिया कहते हैं. इसका मतलब यह कि अब कहीं भी किसी भी मसल्स में दर्द हो तो स्प्लीन को मत भूल जाना. मसल पेन में स्प्लीन पॉइंट को नहीं भूल सकते आप. दैट इज कॉल्ड मसल रिलैक्स एरिया. इट इज ब्रिंगिंग पावर इन द मसल्स. पता होगा दो चार लोगों को. सुमन जैन जी पता है, कुछ को लोगों को, क्योंकि स्प्लीन area is also called muscle. Now someone is telling, oh, I am feeling muscular pain. Treat the spleen area. So now what we are doing, we are treating the whole liver triangle. Give me 1 minute only. तो अब किसी ने कहा कि भाई मेरे को कमर में दर्द हो रहा है, घुटने की मसल्स में दर्द हो रहा है. When someone is feeling any types of the pain, if it is the muscular pain, never forget muscle relax area. Always treat this area. And इंटरमिटेंटली आप लिवर ट्रायंगल पर सबको ट्रीटमेंट दीजिए. आजकल सबकी जरूरत है लिवर ट्रायंगल, क्योंकि आजकल लोगों को लिवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि चलो हम लोगों का खाना पीना गड़बड़ है. वी आर ईटिंग द रिफाइंड तेल, वी आर ईटिंग द रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल इज हाईली हार्मफुल फॉर द लिवर एंड द वाइल डक्ट. चलिए बताइए, एक सबसे बड़ा पॉइजन बताइए जो हमारे लिवर के लिए सबसे खतरनाक है. टेल मी द पॉइजन जो बहुत सारे लोग खाते हैं जानबूझ के, एंड विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिवर. टेल मी वन पॉइजन. यस राइट, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. द एल्यूमिनियम इज द वेरी हाई पॉइजन फॉर द लिवर. एल्यूमिनियम इज क्रिएटिंग द blockage in the liver, blockage in the bile duct. एल्यूमिनियम के बर्तन बाइल डक्ट में ब्लॉकेज पैदा करते हैं. आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के में होना नहीं चाहिए. सो इफ अगर आपको पता चल जाए, पेशेंट इज टेलिंग डॉक्टर वी आर हैविंग सम एल्यूमिनियम वेसल इन अवर होम, so kindly first you start the treatment with the liver triangle. Do the very good detoxification of the liver triangle. पहले आप लिवर ट्रायंगल को ठीक के द्वारा उसके लिवर को क्लींज करिए और फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि एल्यूमिनियम के वेसल्स हमारे लिवर में इतना खतरनाक पॉइजन इकट्ठा कर देते हैं और उससे हमारी बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है. राइट? सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग दिस triangle is really wonderful for multiple problems. So this triangle, treat this triangle for liver disorder, for all types of the liver disorder, for spleen disorder, for all types of the spleen disorder.
and also for muscles, because this also is called muscle relax area. इसे हम मसल रिलैक्स एरिया भी कहते हैं. फाइन. एंड अब हम लिवर के बारे में, आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. This story I have repeated 100 times, but today again I am getting chance to repeat this story. The liver energy is entering from the D20, then going in the eyes, then doing the circle around the mouth. This is the liver chi. Then going in the throat, then passing from the heart. This is the liver energy. Then passing from the liver, this is also liver energy. Then reaching to the genitals, then reaching to the genital part. कि लिवर का जो हम अंदरूनी मार्ग देखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी मेरिडियन होते हैं उनके दो रास्ते होते हैं. एक होता है एक्सटर्नल पाथवे जो हम पढ़ते हैं लिवर मेरिडियन के रूप में, और एक हर मेरिडियन का इंटरनल पाथवे होता है. तो जब हम लिवर का इंटरनल पाथवे देखते हैं तो लिवर की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र या D20 से प्रवेश करती है, आंखों और हमारे लिप्स को सप्लाई करके हमारे थ्रोट में से जाकर हार्ट को भेद कर फिर लिवर के द्वारा होती हुई और हमारे जेनेटल पार्ट तक पहुंचती है. इस पार्ट किसी भी भाग में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लिवर को ट्रीट करते हैं. वी आर ट्रीटिंग द लिवर फॉर दीज ऑल प्रॉब्लम्स, वेदर द पर्सन सफरिंग विद द problem in the eyes or the lips or the throat or in the heart or in the liver or in the genitals. So right now we will focus on the genital. Genital are very deeply connected with the liver. Genitals are very deeply connected with the liver. Right. And there is a very big problem that is called hydrocele. Hydrocele. एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम है हाइड्रोसील. So hydrocele is very common disease. किसी ने ऐसा है जो नहीं सुना इसके बारे में? Anyone who doesn't know about this hydrocele? Do you are aware with the name of hydrocele? बीमारी कॉमन है. You know that. सामान्य भाषा में बोलते हैं कि जो मेल के जो टेस्टिस में पानी भर जाना. There is a fluid deposition in the testes of the male. Okay, there is fluid deposition. It's a surgical procedure, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कान से. We can do the treatment with the help of ear just by doing the treatment in the liver triangle. Just by the liver triangle, in the upper part, in the liver area. Because liver is connected with the genital part. जब हम लिवर को ट्रीट करते हैं तो हम आंखों का इलाज कर सकते हैं, हम गले का कर सकते हैं, हम हार्ट का कर सकते हैं, हम जेनेटल पार्ट का कर सकते हैं. तो लिवर ट्रायंगल इज वेरी यूजफुल. हमारे क्लिनिक में कई पेशेंट आए हैं, मैंने उनके कान को बड़ी बारीकी से देखा और उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को जैसे ही उन्होंने लगाया उनका हाइड्रोसील ठीक हो गया. तो वही पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू शेयर द सेम पॉइंट. विद द हेल्प ऑफ दैट many person got 100% benefit in the hydrocele. So look at this point. ये हाइड्रोसील की बीमारी होती है. हाइड्रोसील की बीमारी में क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं एक तरफ का टेस्टिस में पानी भर जाता है ज्यादा. So which point we are using? This point, the upper point that is in the liver triangle. The single point can treat the hydrocele. हम single point की मदद से हाइड्रोसील का इलाज कर सकते हैं. We can treat the hydrocele with the help of this single point. Okay. So my dear friends, मुझे पता है कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना. I would like to do the demo of the sciatica triangle, of the cervical triangle, and as well as of the liver triangle, but in the next class, because today my model got late, so I will do demonstration on the next class.
तो अब हमारी अगली क्लास होगी मंडे से। वी विल डू द क्लास इन द 3 days a week, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 4:30 ऑनवर्ड्स फॉर द इनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स। ओके, और बाकी लोगों को तो सब आते ही है, ऑरिकुलर है ना। तो अभी ये क्लास है इनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए, है ना। सो फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स वी विल डू द क्लास फॉर द इनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स। अगर किसी व्यक्ति को इनरोल करना है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते, 8160088512। So thank you so much. Now closing the session. See you on Monday.